Okay, class. Good morning to everyone. Today we will discuss about the measurement, the science of measurement. As we have discussed in the last class, what are the different uses of measurement in our daily life? Okay. So later on today in the class we will discuss more a very important thing. So the first question I would ask from you, please आप आंसर करें. Have you ever measured something and got a wrong result? आपने कभी कोई चीज मेजर की हो और आपको कभी रिजल्ट गलत आया हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? Yes. Who want to share his or her experience? Yes. Share your experience. We measure my scale, but it's wrong. Okay. So you have measured your scale, but your measurement was very wrong. Okay. So in our daily life हम बहुत सारे measurement कर रहे होते हैं. Sometimes results सही आ रहे होते हैं और sometimes हमारे पास result गलत आ रहे होते हैं. So in the class we will discuss जो results गलत आते हैं उसे हम क्या कहते हैं और जो results सही आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और क्यों आते हैं. First of all, these are our learning objectives. Today we will discuss about accuracy versus precision. What is accuracy and precision? Then we will identify the anomalous data. What is anomalous? And at the last, you will ask some big questions or thinking questions. Okay? So you all are excited to solve a measurement mystery? Who is excited? Okay, so there is a mystery for you regarding a measurement. So the question arises on your Chromebooks now. The question says, Ali measured objects and recorded the following lengths in centimeter. So you have measurement of 12, 13, 5 and 15. So which measurement do you think is unusual? You just take out in your Chromebooks. We will see the results, how many you have done. Sir, five. Okay. All have 5. Let's do it, then you will give me a reason why. Okay. Last 5 seconds. Okay. So most of you have mentioned that the 5 is a unusual result. Okay. So here is our 5 and you all are agree with the 5. Okay. Now we will tell me why you have chosen the result 5. Other from this is different from other. Yes. So now we will discuss why this has happened. Okay. And how we can is it fixable or not fixable. Before that, we will recall the topic that was accuracy versus precision. So you all have little idea about accuracy and precision. We will discuss it more in a better way. So first of all, the definition of accuracy is that if any value is close to the real or a true value, that will be called accuracy. And precision is what? Measurement, or when measurements are consistent. So these are a very short definition to remember these things, these two definitions. Okay. Now through this example, you can get an idea what is an accuracy and precision. फर्स्ट बुल्स आई में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इस जो बुल्स का जो आई है डॉट का, इस पे चारों से इसके सेंटर पे है. सो वी ऑल जब भी कोई डॉट गेम खेलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लगे, बिकॉज यहाँ पे जब आएगा तो डॉट गेम में डॉट में स्कोर ज्यादा आएगा, इसे बुल्स आई भी कहते हैं. इट मीन्स इट इज एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है. And this one is not accurate but precise. Now what is the very little difference between them? Accuracy and precision में होता क्या है? Suppose this is a bullseye. अगर आपके bullseye के सेंटर में टारगेट्स आपके हिट हो रहे हैं, सेंटर इज द एक्यूरेसी. ओके, ये तो हमने बात कर दी bullseye की. फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ इफ यू आर मेजरिंग एनीथिंग और आपके रिजल्ट, सपोज पानी का टेम्परेचर सपोज 100 सेंटीग्रेड है और आपने जो टेम्परेचर निकाला है वो आपका 99 आ रहा है या 98 आ रहा है, तो आप क्या है रिजल्ट के बिल्कुल करीब हैं. आपका बॉइलिंग पॉइंट जो आपने निकाला है, सो यू आर वेरी क्लोज टू दिस, बट यू आर नॉट एक्यूरेट. ट्रू वैल्यू पर आप पहुंच जाते हैं या उसके बहुत करीब पहुंचा देते हैं, तो आप एक्यूरेसी में आ जाते हैं.
प्रिसिशन में जब आते हैं जब रिजल्ट्स आपके करीब करीब आए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बात की, वी हैव टॉक अबाउट द प्रीवियस एग्जांपल दैट ए स्टूडेंट गॉट रिजल्ट ऑफ 15 16 15 15. Now 15 and 15 is repeating. When values are repeatedly and results are repeated, because experiments are done like this. Scientists जब experiments कर रहे होते हैं तो उनके results क्या हो रहे होते हैं, repeat हो रहे होते हैं. Okay, is it clear to all of you? What is accuracy and precision? Okay, any question from your side? No. No? So this is very important for, because we are learning a measurement chapter. So for measurement chapter, accuracy and the precision is very important, because for any data, if that is not accurate and not precise, so results can be deviate. Now later on you will also learn okay, if there is no good results or not accurate or precise, then what will happen. Okay, now moving forward, you have this activity. You will 3 minutes to draw or complete this activity. Okay, what you have to do, you have 3 dots. You have to, in the first dot you have to give it is precise and it should not be accurate. In second bullseye on a dot you should accurate and not precise. So आपने क्या करना है, dots press करने हैं. So please do it. तो समझ नहीं आया. Open this. Open this. बेटा बाद में आना. Okay, so you can see here there are 3 bullseye or dot. So first में आपने क्या करना है, precise और not accurate. तो आपने यहाँ से you will choose pen और आपने उसे क्लिक करना है. यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है. A के लिए आपको ये डेटा बनाना है, B के लिए ये करना है, और you have 3 minutes to do this. C में it should be not accurate, not precise. You will show the results that should not accurate and not precise in the C. आपने पेन चूज करना है नीचे से and click करना है. Time is 2 minutes left and it's a very easy task. I think. Okay, I will see all your data. Those who are not understanding, please tell me. I will explain you. Don't worry. Okay, I am coming to you. I am coming to you. Okay, Safan, look at this. It's a very easy task. Choose a pen from here. और आपने जहां पर लग रहा है पहला वाला ए में आपने क्या बनाना है, प्रिसाइज और नॉट एक्यूरेट, इस तरह. यस, आपने 2-3 लाइक रिजल्ट आप जितने भी बना सकते हैं, 2 3 4. So now, as we discussed the definition of accuracy and precision, now you all are making your own data. From this short example, you will realize how results can be different from each of you. किस तरह साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनके पास डेटा डिफरेंट आ रहे होते हैं, तो आप लोगों के भी डेटा और प्रेसिशन डिफरेंट होंगे. Okay, last 35 seconds. Once you have done, click on submit. If you have any questions, please ask regarding this activity. Okay, last 8 seconds. I think everyone has submitted. So now we will discuss one of each of your results, and I will show you the difference between. Now this one is the Darshit's results. Now from you will tell me, other than Darshit, that is Darshit has done the first one is correct or not? It is precise but not accurate. Correct. Is it correct? Yes, this one is correct. And second one accurate but not precise. Is it done by right or wrong? No? Okay, those who say no, keep your results at your mind. I will ask you why. And C, neither accurate and not accurate. Is it right? Yes, correct. Is it right? So okay, अब जिन जिन लोगों ने कहा है कि ये गलत है, so tell me. आपका मैं ओपन कर लेता हूँ. जिसने कहा है, किसने कहा था अभी?
Okay, Shobhan, let's open. Okay, first we will see your results. Okay, आपके और दर्शित के रिजल्ट में क्या फर्क था? Accurate है but precise नहीं है. What does it mean? How can we results can be accurate but not precise? Accurate का मतलब है कि डॉट आई के बिल्कुल करीब तो लगा हुआ है बट प्रिसिशन नहीं है, मींस के रिजल्ट्स ज्यादा नहीं है, मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं है. प्रिसिशन में रिपीटेबिलिटी आ रही आती है. वी हैव डिफाइन अ टर्म, वी हैव आल्सो लर्न आई थिंक सो मेनी प्रीवियस क्लासेस. रिपीटेबिलिटी मतलब जो चीज रिपीट हो रही हो. सो रिपीटेबिलिटी यहाँ नहीं है, मींस की रिपीटेंस नहीं है या कंसिस्टेंसी नहीं है. तो यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्यूरेट रिजल्ट. अगर दो तीन डॉट्स आ रहे हैं तो इट कैन बी रिक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि कह रहे हैं एक्यूरेट तो होना चाहिए बट प्रिसाइज नहीं होना चाहिए. एक डॉट तो यहाँ लग रहा है, एक डॉट यहाँ लग रहा है, एक डॉट यहाँ लग रहा है, सॉरी यहाँ पर. तो ये क्या है? एक्यूरेसी में आएंगे बिकॉज वो एक्यूरेट बुल्स आई के बिल्कुल करीब आ रहे हैं. दैट्स व्हाई. Everyone has got it. Now let's see another student's results. Who has drawn how? Okay. Iraj के सारे सही है? Anything you want कि Iraj के result सही ना हो? Iraj, what do you think? You have done all correct? Okay. She is confident much. How about you guys? Are you confident about these results? सारे सही है? ओके, लेट्स गो मूव फॉरवर्ड. शोएब के सारे रिजल्ट सही है? ओके, सही नहीं है. नाउ दिस हैपन, आई वांट दिस फ्रॉम यू. समटाइम व्हाट हैपेंस कि 10 साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं तो किसी के रिजल्ट बहुत डिफरेंट आते हैं, किसी के रिजल्ट बहुत सही आते हैं. नाउ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ये सही नहीं है. दिस इज प्रिसाइज और नॉट एक्यूरेट. नाउ हमारे ही क्लास में ही हमें देखे कितना ओपिनियंस का डिफरेंस आ रहा है. एक बच्चे ने किया, उसको लग रहा है वो सही है. जो सब साइंटिस्ट भी कर रहे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका डेटा सही होता है, बट समटाइम अदर साइंटिस्ट हैव डन सेम रिसर्च सेम फील्ड में तो उनका डेटा डिफरेंट आ रहा था. तो इन साइंस यू ऑल सी द डेटाज. हमेशा साइंस के अंदर रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स आते हैं. सो हियर यू कैन सी बाय दिस सिंपल एक्टिविटी यू गॉट कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में कितना डिफरेंस आ सकता है. लाइक एग्जांपल, आपने कोई वेदर रिपोर्ट बनाई, आपने मैं किया तो 36 सेंटीग्रेड है नवाबशाह का टेम्परेचर, मे बी इट कैन नॉट बी 36, 35 हो सकता है. तो रिजल्ट्स कैन बी डेविएट फ्रॉम ईच अदर. साइंटिस्ट का आपस में भी और हम आपस में भी बैठ के रिजल्ट्स को डिफरेंट बना सकते हैं. सो दिस वाज अ शॉर्ट एक्टिविटी. उबैदुल्लाह, what do you think? Is it same? Others? Anyone want to comment on this result? All are correct. This one is precise but not accurate. Accurate but not precise. Yes. B1 is wrong. B1 is wrong. Why? Yes. Because it's not accurate. Not accurate. Okay. But accuracy है इसमें Yes, sir. and precision not precision है. मतलब precision नहीं है इनके अकॉर्डिंग. Neither precise and neither accurate, ये तो बिल्कुल करेक्ट है. तो समटाइम क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट्स लग रहे होते हैं वो उसमें कमी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन हैव सीन डिफरेंट रिजल्ट्स. नाउ वी विल मूव फर्दर, डू a detective training or you have to spot the difference. Okay, let's see. So you are excited for the group task now. Okay, it's a group task. You will have to find something. Now as you all seen the dot activity, okay, from dot activity you have find कि आपका result. Yes, okay, let's देख लेते हैं. But I think so it will be submitted now. Yes, it is submit हो चुका है. ये दोबारा से ऑन होगा. Okay, मैं यहाँ से zoom कर लेता हूँ. I can see your results, Shubhan, and okay. So your results are, yes, this one is wrong. Okay, now जो results wrong आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? We will discuss in this class also how what we call this. So now this is a group task. You have to be a detective. So you will do this task in a group. Okay, and groups should be you both.
ओके आप दोनों एंड लास्ट में आप दोनों. ओके आपका काम क्या है? व्हाट इज योर जॉब? First of all, I will explain you. Beta, please look at here. Then you will have to do. What you have to do? You are a detective now, so you have this result. Okay. Now your mission is identify any measurement looks unusual or suspicious. आपको लगता है कोई इसमें डेटा है या मेजरमेंट है वो डिफरेंट है या सस्पिशियस है, लाइक वो अलग हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है. फिर आपने you have to explain with this reasoning. This could be a usual number, unusual number. Yes, sir. अच्छा पूछें कि कौन कौन बच्चे पैसे लेते हैं रिकॉर्डिंग. Yes. Okay, so you have understood. Beta, look at here on the board. Beta, everyone. Class. Look at here. The first question you will explain it could be an unusual number or to be a mistake. Is it a mistake? क्या जो आपने नंबर फाइंड किया है वो एक मिस्टेक था या अनयूजुअल नंबर था? और could it be a reveal something interesting or important about the object? और think carefully and share your ideas with your group. So आपने ये टास्क करना है ग्रुप के अंदर. आपका काम ये है कि आपने इन नंबर में से कोई एक नंबर चूज करना है जो आपको लगता है कि वो डिफरेंट है अदर नंबर से और वो क्यों है. You have to explain this. You will do this activity on collaborative board. Okay, your results will be here. So you have I am giving you 5 minutes to do this activity. Okay, you will simply answer these questions in that board. Let's start. Anything you feel आपको समझ नहीं आ रहा, you can ask me. We will discuss that. Okay. You have these results. Yes. Yes. Please open that door. Open that. Open that door. What happened? The airport. Do your work, beta. Okay. Start with the first thing, and also you have to give the reason. Which value do you think if you feel any problem, please ask me, I will explain you. It's a group task, Safan and you will work together. You do on one Chromebook. ये खुला रहे Chromebook, आप एक Chromebook पे कर लें. It is as you are one only, so you will work alone, but you have to find the answers from your own. Then I will discuss with you. सर ये कोर्स को भी चेक नहीं करना है. No, beta. और Yes, you have to do that. This is the data of different any environment. यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिला है 12, 12, 13, 12, 15. Now what you have to do, you have to solve this question first. Any environment that looks unusual, आपको लगता है कि unusual है या suspicious है, उस नंबर को आपने अलग करके लिखना है. फिर आपने लिखना है कि उस वैल्यू को आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हो या उसको और इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो. उसको वैल्यू को डेटा से निकाल दोगे या उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करोगे. So you have to answer these questions. Okay, I think so. Most of you have done. So I am seeing your answers here on the board. Okay. Once you have done all the questions of this investigation, so now you all are detectives. Means detective का काम क्या होता है कि कोई मिस्ट्री हुई है कहीं, आपने जाकर ढूंढना है कि ये मिस्ट्री कैसे होगी. कहीं जैसे नहीं होता फिल्मों में दिखाया जाता है. डिटेक्टिव का काम क्या होता है
डिटेक्टिव्स जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, तो नाउ यू ऑल आर डूइंग लाइक सेम। आपको एक डेटा सेट दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कोई नंबर है तो सस्पिशियस हो। Write these all points in a one point. Iraj, are you understanding? Do you need any help? Yes, Darshit. Darshit and Shoaib, do you need any help? I think so. You are very good detectives, so you can do it by yourself. Okay, now you all have 2 minutes because केस को जल्दी ये आपको सॉल्व करना है। ये मिस्ट्री आपको 2 मिनट में फाइंड करनी है। Then I will ask you from each of you, okay, why you have chosen this any number that you are mentioning. You all have find. Can we wrap up this activity? Iraj, done? Okay. Those who have done, please thumbs up. Okay. I think so. Your Chromebook will be work as the सब light चली गई आ जाएगी। Okay. So now we will discuss the results on the board. Okay. हमारे पास डेटा हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर 12, 13, then we have 12, 12, 12, 13, 12, 5. 13, 12, 12 and 5. So the first question was, is there any data which you think is unusual or suspicious? So which data you find? And 5. Okay, ask from group wise. Okay, Iraj. Okay, according to Iraj, it is 5. Okay, it's 5 from Iraj. Okay, Safan, 5 and Shubhan, 5. Darshit and Shoaib, 5. So you all have done. You all have given this number, 5. According to you all, that 5 number is very suspicious. It means there is something जो कि अलग है सबसे. Now, one by one, give me the reason why you do think 5 is different from other. So can I? Yes, Safan. So 5 is a smaller number than other. And okay, Shobhan, And 5 is a different number. like why do you think? Because all numbers are big and 5 is small. Okay, according to you that all our numbers are big and all numbers are big and only the 5 is very small. Now this could be a result, your answer. So you all have solved this mystery. And the second question is, should we investigate this more or should we discard this value? क्या हमें इसको निकाल देना चाहिए अपने रिजल्ट में से या इसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? Yes, what will answer as a group? आप कह रहे हैं डिस्कार्ड करना चाहिए? Yes, Shoaib and Darshit.
डिस्कार्ड करना चाहिए? I think I'll discard it. You will discard it. So you all are agree that we should discard this number. Okay. As usually, you all have solved this mystery. Now, in science, in reality, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के अंदर हम इन चीजों को डिस्कार्ड नहीं करते. What we do, because there is very interesting thing I am sharing on your screen here. Just give me 1 second. Okay. So according to your result, it should be as a class. आप सब लोगों ने एग्री किया है कि इस नंबर को डिस्कार्ड करना चाहिए. बट इफ यू गो फर्दर, जो नंबर आपका डिफरेंट आया है, व्हाट वी कॉल दिस नंबर, वी कॉल दिस नंबर एज एन anomalous result. Anomalous, what is mean by anomalous? Anomalous is any weird measurement. वासे in this is then in this three number, which one is a weird number? 100, 100 and 85. 85 is a weird measurement. So now before जो हमने डिटेक्टिव मिस्ट्री सॉल्व की, उसमें एक 5 नंबर अलग था. तो जो डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट डेटा है, उसको कहा जाता है anomalous result. What we call that? Anomalous. This in this picture you can all see that all person are in a black color, one is in a red. So red is a different. हमेशा जो different value आती है वो अलग से निकल के आती है. That's why we call it anomalous. The word anomalous means weird. यहाँ पे भी आपको बोला कि measurement of water is 100, 100 and 85. So according to your opinions, that हमें क्या करना चाहिए? Anomalous result को discard करना चाहिए. But in reality, in science, we cannot discard any value, because a famous scientist called Alexander Fleming, उनकी एक डिस्कवरी के टाइम पे, ये एक कहानी है एक साइंटिस्ट की जो एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्च कर रहे थे. बाय मिस्टेक उनका वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और बाय मिस्टेक इन्होंने एक मोल तैयार किया, एक पेनिसिलिन दवाई तैयार की, जो कि आज भी बैक्टीरिया के लिए किल करने के लिए यूज होती है. ही वॉज डूइंग रिसर्च ऑन अनदर टॉपिक. वो किसी और चीज पे रिसर्च कर रहे थे, और उनके पास ये चीज डिस्कवर हो गई, पेनिसिलिन डिस्कवर हो गया, दैट किल्स द बैक्टीरिया. सो नाउ फ्रॉम दिस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टोरी आपने क्या सीखा? कि साइंस के अंदर कोई भी डेटा गलत नहीं हो सकता. यू कैन नॉट निगेशिएट एनी डेटा. आप किसी भी डेटा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते. माइट बी पॉसिबल वो किसी डिस्कवरी की तरफ आपको लेके जाए. तो साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी. अगर ये साइंटिस्ट उस वक्त फेल ना होते तो आज ये दवाई डिस्कवर ना होती, ये पेनिसिलिन डिस्कवर ना होता. So this is how I am sharing with this one of these stories. There are more stories in the science कि किसी चीज की गलत केमिकल के यूज होने की वजह से कुछ और बन गया. दो केमिकल को वो मिक्स करना चाह रहे थे, वहां पे anomalous डेटा डाला गया और उसे कुछ और बन गया. This happen in the science always. साइंस ऐसे ही डिस्कवरीज करती है. So what we have learned from the Alexander Fleming discovery, क्या सीखा इनकी स्टोरी से आपने? यस, साइंस में कभी भी डेटा को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ आफ्टर दिस वंडरफुल स्टोरी, ओके, you all have learned this Alexander. I hope you will remember this story. What he has discovered? The penicillin. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? Penicillin. So now who will tell me what lesson do we learn from the mistake in science? Who will tell me? हम साइंस की मिस्टेक से क्या सीखते हैं? What we learn? If experiment failed, don't give up. When experiment is failed, don't give up. Yes, Darshit. Don't discard anything. Don't discard. Yes. कभी हार नहीं मानना experiment. Okay. कभी हार नहीं माननी चाहिए. Yes. Never give up. Yes. उबैदुल्लाह and Shoban. Copy. सर अगर कुछ भी हो जाए लेकिन हमको रिसर्च पूरी करनी चाहिए. Yes. साइंस हमें बता दी है कि आपने कोई भी चीज. Yes. Yes. बिल्कुल. Okay. Now you have another question. You did a science experiments. Your results are 95, 93 and 50%. Okay. आपके रिजल्ट्स हैं, ये आपके सारे रिजल्ट्स हैं. So now tell me, you will neglect, use only the good result, show all numbers or investigate 50% further. आप क्या करेंगे? यहां आप छोड़ देंगे, नो आंसर. यहां सिर्फ आप गुड नंबर को यूज करेंगे. आपका डेटा है
योर डेटा इज, आपने रिजल्ट आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपके पास डेटा है 95%, अदर डेटा इज 93% एंड द रेस्ट ऑफ डेटा इज 50%. सो आपके पास 3 डेटा सेट्स आ गए. अब आप इन 3 डेटा सेट को सारों को यूज करोगे या कुछ नंबर्स को यूज करोगे या उसको इन्वेस्टिगेट और करोगे उस डेटा को, फिर 50% को और इन्वेस्टिगेट करोगे. सो यू ऑल हैव 1 minute to think about it and decide your answers. Okay, after 1 minute I will discuss with you why you have done this. You can check, choose any answer. You can change your answers. Okay, अगर आपको लगता है, मुझे लगता है ये है, give your own answers, don't rely on others कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए. No, think about it. मुझे नंबर्स को यूज करना चाहिए. Okay, once you all have done so, let me tell me, आप सब लोगों ने ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि सबसे छोटा बंदा Okay, वहां से what do you think? ये कह रहा है कि देखिए, ये ना कह रहा है कि 95 नंबर को लेकर आओ डेटा सेट में, ना कह रहा है 93, कह रहा है कि बाकी जो 50% है, आपके पास रिजल्ट आया 50% बच गया है, तो शुड वी इन्वेस्टिगेट द फर्दर 50% या सिर्फ हम गुड नंबर को यूज कर ले? 95% तो डेटा आ गया ना, तो शुड वी स्टॉप हियर? और यहाँ जो 50% जो थर्ड डेटा सेट आया हमारे पास, उसमें जो 50% बचा है उसको इन्वेस्टिगेट करें. यस, जिसने 50 ये किया है, सी मुझे आंसर्स दे दो प्लीज. व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने दे दिया. व्हाट, आप लोगों को क्या लगता है साइंटिस्टों को ये क्यों करना चाहिए? बाकी 50% पे रिसर्च क्यों करनी चाहिए? Yes, this is, yes, a good answer coming from your side that it's a very good or unusual number. तो साइंस में हमेशा क्या होता है? साइंस is all about discoveries. Okay, new things. Yes, Darshit, do you want to share something? Suspicious भी हो सकता है. और देखें, आपको नहीं पता कि वो 50% आपको किस डिस्कवरी की तरफ ले जाए. तो as we have learned Alexander Fleming स्टोरी, वो एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया, पर फिर भी जब वो फेल हुआ उससे एक चीज डिस्कवर हो गई. सो व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट इन साइंस में जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आपके पास डेटा कम आ रहा है या 50% आ रहा है, तो आप उस डेटा को निग्लेक्ट नहीं करें. ओके, यूज दैट डेटा, मे बी यू फाइंड समथिंग एल्स, आपको कुछ और नजर आ जाए. ओके, नाउ इट्स टाइम टू योर टाइम टू आस्क सम बिग क्वेश्चंस. अगर ऐसा होता कि व्हाट वुड हैपन इफ एवरीवन इग्नोर रिजल्ट्स दैट डोंट लुक परफेक्ट, अगर ऐसा होता कि जैसे आपने फर्स्ट रिजल्ट में बात की थी कि 5, आप सब लोगों ने कहा था 5 एक अनयूजुअल नंबर है, अगर सब लोग उस डेटा को निकाल देते, बिकॉज व्हेन वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग द नंबर 5, इग्नोर करते रिजल्ट्स को जो परफेक्ट नहीं होते, सो व्हाट हैपन इफ वी नेग्लेक्ट और इग्नोर रिजल्ट्स दैट आर नॉट परफेक्ट? तो क्या होगा उससे? यस, थिंक अबाउट इट. अगर हम इस तरह के नंबर्स को, 5 को, इस तरह के नंबर जो अलग आ रहे हैं, तो हम डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें, फिर क्या होगा? व्हाट कुड बी हैपन? थिंक अबाउट इट. वो तो हम यूजुअल नंबर तो मिल गया ना हमें, अगर हम इन नंबर्स को हम निकाल दें अपने डेटा में से, व्हाट विल हैपन? थिंक अबाउट इट. Why this number is? One answer is why. Yes, very good, Iraj. Any other? Discover. Any other thing? We can't find anomalous data. We can't find. We have find it. हमने anomalous find कर लिया है, पर हमने find करने के बाद कहा कि इस नंबर को निकाल देते हैं. तो अगर हम सब लोग इस तरह के नंबर्स को निकालते रहे, तो क्या होगा? We can't discover anything. We can't discover anything. और yes, Shubhan, think about it. How we discover? Discovery rest of 50% से हो सकती है या नहीं हो सकती? 50% डेटा से डिस्कवरी हो जाती है या नहीं? 50% डेटा से डिस्कवरी हो सकती है साइंस में, अगर आधा डेटा आ जाए तो? नहीं सर, 100% 100% से होती है. 100% फुल मतलब होना चाहिए सर. Yes, your answers are absolutely right. Sometimes क्या होता है, 100% डेटा मिलना चाहिए तब होता है, बट समटाइम वी ऑल्सो फाइंड कि 50% का भी आपके पास अगर रिजल्ट हो तब भी आपके पास डेटा मिल सकता है. ओके, सो
You all have any big question you want to ask? अगर आपके पास दिमाग में कोई साइंस से रिलेटेड कोई बिग सवाल है, कोई थिंकिंग सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, so you can write down. There should be a big question that can be about today's results, experiment से related, साइंस से रिलेटेड. आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, so you can ask. You can ask or post here. I will try to answer those questions. Okay. हम collectively discover करेंगे. Okay. Any big question in your mind? कि सर मुझे लगता है this could be a curiosity in my think कि साइंस में ये क्यों हो रहा है? So I'm giving you 2 to 3 minutes. Revise all the topics and think about it. Anything you find unusual. सर ये काम नहीं कर भाई. Why it is not working? It is working. Write as possible as if you can write one question, you can write one, more than one, you are open to share any question. Or you can ask without asking, write किए बगैर भी आप लिख सकते हैं, आप वैसे भी पूछ सकते हैं. Yes. Sir, why we study science experiments? Why we learn science experiments? Okay, the first question is this. It's a very good question from Wase that why we learn science experiments. When we all questions come together, why science exists? Okay, try to ask the question from this topic that we have learned today. इससे कोई big सवाल की thinking provoking question पूछें. आपको लग रहा हो कि ये मुझे लगता है कि ये इस topic से एक सवाल हो सकता है. Any question in your mind? It could be any thinking question जो आपके दिमाग में. Why science is touching on everything instead they can discard it? Okay, very good question from Iraj. That चले इसी को हम पहले सवाल पे डिस्कवर कर लेते हैं जो वासे ने पूछा, फिर हम इरज के सवाल पे भी आता है कि why experiments are always done in the science? Because science is all about observation and experiments. Science, yes, yes, we come to this question also. Science, उनका जो पहला सवाल है, I have given you answer. Science is all about the discovery and experiment. Science क्या करती है? चीजों को, नेचर को ऑब्जर्व करती है, देन न्यू डिस्कवरीज की तरफ जाती है. हमने बहुत सारी चीजें दूसरी चीजों को देखकर डिस्कवर की. एज यू लर्न कि हमने एरोप्लेन बर्ड्स को देख के हमने एरोप्लेन्स बनाए. सो दिस इज कैन बी ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पास डेटा सेट्स आते हैं कि ये दो चीजें कैसे बनी, फर्दर दो चीजें कैसे बन सकती हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इरज, द व्हाई इज साइंस रिसर्चिंग ऑन ईच थिंग इंस्टेड दे कैन डिस्कवर दैट. कह रहे कि साइंस बार बार जो है वो रिसर्च क्यों कर सकती है, हालांकि उनको वो डिस्कार्ड भी कर सकती है. तो बिकॉज ये आज की क्लास में हमने डिस्कवर किया कि फ्रॉम द विच स्टोरी, आज हमने किसकी स्टोरी सुनी? सर ये फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उनकी एक्सपेरिमेंट फेल हुई पर फिर भी उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया डेटा अपना. उसी डेटा से, उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या फाइंड किया? पेनिसिलिन. So this is a very good example for you. There are more examples you can find. Okay. So why science exists? Okay, science क्यों exist करते हैं? Because we all exist and science is all about us. हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उसके अंदर साइंस मौजूद है. Safwan, your question is why anomalous data is important? why anomalous data is important? Very good question from Safwan. That anomalous data क्यों important है? Because anomalous, जब anomaly रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा ना कि कोई कुछ चीज यहाँ या तो इसमें एडिशन हुई है या सब्ट्रैक्शन हुई है. तो एनॉमली डेटा को कभी भी हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, हमने उसको दिमाग में रख के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है. आज की क्लास में हमने यही सीखा है. ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन, ऑल द आंसर्स आर डन. ओके, नाउ वी विल फर्दर. यस, What our first experiment happened on science? what was the first experiment? I don't think so any data would be there. I don't know about that, but हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. We will keep this class, this question in mind. हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कवर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कुछ हमारे आज के लेक्चर के की पॉइंट्स हैं. आप सब लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा. सो नाउ वी हैव अ क्विज. ओके, सो यू विल हैव टू डू दिस क्विज. We will end this lecture with this quiz, but before starting the quiz, wait.
before starting the quiz, because the quiz will be the last thing to do this, these are our end strong takeaways. आज की क्लास के अगर हम takeaways की बात करें, these are the end takeaways जो आपको end of the class आपको पता होनी चाहिए कि आज आपने क्या सीखा. First thing is science is about curiosity, honesty and careful observation. Science में हमेशा आपको आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. देखिए आपने जो 50% डेटा है उसको डिस्कार्ड नहीं किया था, आपने कहा कि चले इसको और इन्वेस्टिगेट करते हैं. देन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और मिस्टेक कैन लीड टू डिस्कवरीज लाइक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. मतलब क्योंकि ऐसा डेटा आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है या जो गलत है, रॉन्ग आपको लगता है, बाय मिस्टेक आ रहा है, उसको आपने अलग नहीं कर देना है. मे बी दिस कैन लीड टू अ डिस्कवरी. So you all have to keep all the results in your mind, and at the last, science is not about the perfect answer, it about the honest questions. Science हमेशा perfect answers की तरफ नहीं जाती. Science हमेशा honest questions, जहाँ questions honestly पूछे जाएं. Okay, so this was today's takeaway. Now we will end this class with an interesting quiz, and I hope you will enjoy this quiz. Let's see, we will take the lead. Okay. Try to do individually. I would suggest कि अलग अलग करें. आप दोनों साथ बैठ जाए because you don't have Chromebook today. Okay, let's start. There are few questions on your screen. After learning all the topic from accuracy to anomalous and how can we not to neglect the data, we will end with this quiz. Okay, should we start? Everyone has joined. There are 6 participants, 8 I think so. Should we start? Okay, 1, 2, start. Okay, I will just watch and see how you are doing. Okay, I will just watch how you are doing. I will not tell you the answers. Once you all done, it will go further. There are 7 questions there. Okay. Last 2 questions. Okay, second last question. Identify the anomalous result leading to the given data. 33, 29, 1, 3, 29, 31 and 32. Okay, the last questions. Okay, then Yes, sir. okay, from you all, Shoban Ali Zardari got the first
in the leaderboard. Very good. Everyone has done wonderful job. So at the last, before ending to the class, who will tell me which one is anomalous result? Here. Which one is from here, beta? 20 is an anomalous result. So I hope you have learned this today and you will remember this. Inshallah, we will discuss it more tomorrow. Thank you so much.